So, good evening, everybody. Myself, Dr. Vijay Mahida, discussing on the topic of research methodology for TYBI semester 5. Today we are going to discuss about the chapter number 1, Introduction to Research, and the content which we are going to cover in today's lecture is the meaning of research, understanding of research, and objectives of research methodology. So I'm expecting all of you to be alert, be aware. I'm looking so many participants are ready to join. I think the 55 participants already joined. I don't want to mute the meeting because this is the first lecture and they can join us immediately. So dear student, TYBBA semester 5 research methodology, chapter number 1, introduction to research. This is a lecture 1 dated 15 June 2020 at 6 p.m. And we are going to start with the session now. As far as the topic is concerned, research methodology. Dear student, when we speak about the research methodology, there is a very, very important word which we need to understand first, and that is a research. When we speak about the word research, research is again a combination of two words, that is re and search. Research. Now, what is the meaning of re? Re is nothing but again and again. For example, redial, refresh, something like that. Research. Search again and again. Search whatever is already searched, some advanced search into that is a research. Students, whenever there is a problem, there is a chance of research. In simple language, if I speak, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहां पे रिसर्च की जरूरत पड़ती है. Research is the solution to every problem. You can solve any kind of problem, any kind of issue if you will research properly. Certainly, our mind must be research oriented mind. We should ask a question to ourselves: why, what, when, where, how. Don't accept anything. There must be some reason behind it. For example, when price rises, demand contracts. When price falls, demand expands. We are studying in the law of demand. It means there are two variables called price and demand which are interacting with each other. I hope you are listening to me. Yes or no? Show your thumb. Yeah. So, there are two factors who are interconnected with each other. There are clearly causes and effect relations. Hello, one second. There are clear causes and effect relationship. One second. There are causes and effect relationship. One thing affect the another. It is clearly a positive or negative direction between two factors. So it helps to create a relationship between two things. And in this, we need to conduct a detailed research. Okay. So when we speak about research methodology, we need to conduct a depth study about the topic. Dear student, as I told you, searching again and again is a research. So today we are going to study about the meaning of research and why we are studying the research methodology, why we are studying about the research. Objectives of studying the research. So shall we start with the topic now? Yes? Yes.
Students, you can see here, research the systematic method consisting of enunciating the problem, formulating an hypothesis, collecting the facts or data, analyzing the facts and reaching certain conclusion either in the form of solution towards the concerned problem or in certain generalization for some theoretical formulation. Try to understand again. The definition says, the meaning says that systematic method, it is a method consisting of enunciating the problem. I said you, research starts with problem. Whenever there is a problem, there is a scope of research. So it consists of enunciating the problem, defining the problem, elaborating the problem, identifying the problem. The first step in research is to identify the problem. For example, whenever you are going to the doctor, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले आपको पूछता है कि आपको क्या हो रहा है. कभी ऐसा कर सकता है कि कुछ पूछा नहीं, उसके बगैर ही 2-4 इंजेक्शन दे दिए, 4-5 ग्लूकोज का बोतल छोड़ा दिया, ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है. The first question doctor asks is that आपको क्या हो रहा है. फर्स्ट वो स्टडी करता है कि आपके सिम्टम्स क्या है. इन शॉर्ट, आपका प्रॉब्लम क्या है. जब तक आपका प्रॉब्लम वो नहीं समझ पाएगा, तब तक आपको उसका इलाज नहीं दे पाएगा. Am I right? तब तक आपको वो दवाई नहीं दे पाएगा. वैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो पहले आपको वो प्रॉब्लम क्या है वो समझना पड़ेगा. सपोज कोई 2 लोगों के बीच में फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है. समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन 2 पीपल. आप ऐसे बीच में जाके वो दोनों को विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट समझ के उन लोगों को सॉल्यूशन दे दिया, नहीं चलेगा. द फर्स्ट स्टेप इज दैट आपको पहले समझना पड़ेगा कि रियली प्रॉब्लम क्या है, और जब आपको समझेगा प्रॉब्लम क्या है, तभी भी आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हो. अदरवाइज इट विल बी इनजस्टिस टू समबडी. It will be injustice. So, the systematic method consisting of enunciating the problem, then formulating a hypothesis. Hypothesis, condition. Hypothesis, situation. How you will able to solve a particular problem, and while solving a particular problem, what needs to be assumed. For example, while writing a definition for a law of demand, other factor remaining constant, the demand for the commodities varies inversely with price. ये definition हम लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं other factor remaining constant, other thing remains same, other thing being equal. ये जो हम लिखते हैं ना, दिस इज अ कंडीशन, वो कंडीशन है, वो हाइपोथेसिस है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड ट्रू हो सकता है, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड ट्रू नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस टू प्रूव आवर सर्च, टू प्रूव आवर रिसर्च. लेट मी टेल यू द अनदर थिंग. कलेक्टिंग द फैक्ट्स और डेटा. Whenever you have to come to the conclusion of anything, the most important thing you have to do is fact finding. सच्चाई यानी कि ओरिजिनल डेटा हो, और जो डिसीजन ओरिजिनल डेटा को ध्यान में रख के लिया गया होगा वही ऑथेंटिक डिसीजन होता है. अदरवाइज देयर इज अ मोर चांस ऑफ इनजस्टिस. दैट्स व्हाई कलेक्टिंग द फैक्ट्स और डेटा. There is a difference between information and data. Information may be right, information may be wrong.
But when it comes to the data, it should be statistically proved. It should be more original in nature. आपको किसी ने कह दिया कि इंफॉर्मेशन दे दिया कि इसका ऐसा होता है उसका वैसा होता है, ये यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो सच्चाई भी हो सकती है, वो झूठ भी हो सकता है. But when it comes to the data, data should be original, data should be right, data should be authentic. Data must be perfect. Data must be clear. So, the third thing here, what we have studied is collecting the facts or data. So, when we speak about the systematic method consisting of enunciating the problem, first the problem, formulating the hypothesis condition to solve that problem, and collecting the facts or data. Now, when we are collecting the data, there are a lot of data we are collecting. Even in the computer, when we are saying the thing, it is being saved like anything. It becomes very difficult when we are trying to retrieve it. It becomes very difficult when it goes for we goes for the retrieving. जब उस डेटा को कलेक्ट करके बराबर से प्रेजेंट करना होता है, तो हमें वो डेटा हमारे जमा किया हुआ डेटा मिलता नहीं है. तो what is necessary? Necessary thing is that analyzing the facts and reaching certain conclusion. Analyzing the fact is most important. So that is why it is very necessary in every research that collecting the data and analyzing the data, and then presentation of the data for understanding. Let me read the points again. The systematic method consisting of enunciating the problem, formulating a hypothesis, collecting the facts or data, analyzing the fact. And after analyzing and presenting the fact and reaching a certain conclusion, इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. फिर आप जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, जो ब्रॉड डेटा कलेक्ट किया, उससे कुछ चीजें मेन जो आपके रिसर्च के लिए चाहिए वो लेके आएंगे, और वो आपको आपका रिसर्च जिसके लिए किया है उसके कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगा. That is what we can call it as a reaching certain conclusion. फिर वो conclusion either in the form of a solution towards the concerned problem or in certain generalization. Generalization means making a common statement. इतने सारे डेटा को पढ़ के ऐसा लगा कि this is the fact. Now, every day we are watching the people getting quarantined, the people getting positive. Lot of statistics the WHO is updating every day. Again, I would like to tell you, all of you must download the Arogya Setu app. Arogya Setu app provides us statistics all over the India. What is happening in Maharashtra, what is happening in all other states of India. This data helps us to find some kind of action to be taken. महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं. जैसा नंबर ऑफ केसेस बढ़ते दिख रहे हैं, स्टैटिस्टिक दिख रहा है, वैसे हम लोगों की घबराहट और बढ़ रही है. और महाराष्ट्र में भी जब हम मुंबई की बात कर रहे हैं, so Mumbai is under the more problem, more damage. So if we are in Mumbai, it is our responsibility to save us, save our family, and save the people surrounded by us. At least by creating a positive awareness. अब देखो, इतना सारा मैं क्यों बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र को बचाना है, मुंबई को बचाना है, अपने सोसाइटी को बचाना है. क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक बोलता है कि मुंबई में कंडीशन खराब है. एग्री? अगर एग्री हो तो यू शुड लेट मी शो योर थंब. यस. सो दोस्तों, again I would like to read the part to understand the systematic consisting of enunciating the problem, formulating an hypothesis, collecting the facts or data, analyzing the fact, and reaching certain conclusion, either in the form of solution, या तो हम solution लेके आएंगे towards the concerned problem, or making a general statement for some theoretical formulation. So research is very important for your two things: solving a problem and making a generalized statement. Example.
whenever you are solving any problem in accountancy, हम तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को भी प्रॉब्लम कहते हैं, हम तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को भी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, उसका नाम ही प्रॉब्लम है। Am I right? अब उस प्रॉब्लम का क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, पूरा प्रॉब्लम रीड करते हैं, यस और नो। उसके बाद देखते हैं क्या क्या टिक करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कौन सी चीजों को हमें समझना है, कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ इफेक्ट कर रहा है, हम लोग समझते हैं, यस और नो। यस, ये समझने के बाद ही हम प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू करते हैं। ऐसा कभी हम नहीं करते कि कुछ भी करके प्रॉब्लम को ऐसे भी बना दिया, ऐसा नहीं करते। हम समझते हैं, we understand the problem, we analyze the problem, then only we able to solve the problem. So I hope the first slide is clear to everybody, yes or no? Yes. Are you enjoying the lecture? Good. May I go ahead? May I go ahead now? Yes. Now, objective of research. हम research क्यों करते हैं? Just a second, few students are in waiting room. Let me add them. See, आप लोग समझ सकते हो कि एडमिट करने में बार बार कितनी तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने कहा था 6 बजे के पहले ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे मेरा स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो जाता है। Why we are doing the research? What are the objectives of the research? Research helps in finding out the truth which is hidden. ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी हम क्यों करते हैं, लाइफ में हमें रिसर्च क्यों करना चाहिए। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। क्या आप लोग सब इंटरेस्टेड हो कि नहीं ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए, सच्चाई की तरफ जाना है ना? यस, फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन एंड विच इज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। आज तक जो ट्रूथ सामने नहीं आया है उसको लेके आना है, इसीलिए हमें रिसर्च करना है। एग्री? Yes. Point number 2. Gain the familiarity with the phenomenon or to achieve new insights into it. Gain the familiarity, हासिल करना है, मिलना चाहिए हमें कुछ, with the phenomena or to achieve new insights into it. उसके अंदर क्या नया है वो ढूंढ के लाना है, जो आज तक किसी ने नहीं खोजा, वहां तक जाना है। Number 3. पोर्ट्रे करता है, प्रेजेंट करने के लिए। What? Portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group. Portray accurately, properly, perfectly, क्या? The characteristic of a particular individual, किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना, सिचुएशन प्रेजेंट करना और उस ग्रुप को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना। जब तक आप कोई भी पर्सन के ऊपर रिसर्च नहीं करते, जब तक आप कोई भी सिचुएशन का रिसर्च नहीं करते, जब तक आप पर्टिकुलर ग्रुप का रिसर्च नहीं करते, तब तक आप उस ग्रुप को कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हो, कोई सजेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, उसको कहा गया है कि यू आर बीइंग अफेक्टेड पॉजिटिव विद द कोरोना एंड यू हैव टू रिमेन प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये पॉजिटिव होने के बाद भी ना बोलते, नहीं मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊंगा। ऐसी परिस्थिति में हमें, हमारा काम क्या है, उसको समझाना। उसके लिए हमें उसको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो तुझे ये सिम्टम्स है, तो तुझे ये पॉजिटिव है, तेरे वजह से क्या हो सकता है, तू नहीं जाएगा तो तेरा फैमिली का क्या होगा, तेरा क्या होगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसको पोर्ट्रे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। यू कैन नॉट पास अ रिजोल्यूशन विदाउट बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। कुछ भी रिजोल्यूशन पास करना है तो पहले स्टडी तो करो। Until and unless you are not studying properly, you cannot pass a resolution. So, portray accurately the characteristic of a particular individual, situation, or a group. Next slide. Determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. Let me give you the example. Frequency, कितनी बार, how many times. दोस्तों,
एक सिंपल सी बात है, एवरी डे we are watching in the news how many new patients are admitted in the October. Every day from last 1.5 months I am watching the news in the local news एन वार्ड का न्यूज में सुनते हैं कि कितने नए पेशेंट एन वार्ड में आए। आज 72 आए, कल 78 थे, परसों 82 थे। एक दिन तो ऐसा गया था 103 पेशेंट पर डे इन घाटकोपर। अब ये देखो ना कितना पेशेंट का रेट बढ़ रहा है, डे वाइज स्टैटिस्टिक देखो ना। इससे समझ में आता है कि यहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे जो परिस्थिति थी, लॉकडाउन ओपन करने के बाद वो परिस्थिति थोड़ी और बिगड़ी है। देखो डेटा बोलता है, स्टैटिस्टिक बोलता है। नेक्स्ट, कितने पुलिस कर्मचारियों को कोरोना बाधित हुआ, हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, आज उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही। अब ये रिसर्च हमें ऐसे कोई भी एरिया रहेगा उसका स्टडी करने के बाद उसके फ्रीक्वेंसी को समझाता है, उसके डेटा कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है, और उसका जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तब हमको समझता है कि कितना फ्रीक्वेंसी है उसका। उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, और जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वैसा वहां पे उसके लिए सॉल्यूशन निकलना भी जरूरी है। अब जब समझ में आ रहा है कि घाटकोपर में पेशेंट की संख्या कमी नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि घाटकोपर के लोगों को, जनता को हमें बताना चाहिए कि स्टे एट होम, जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलो। उनको बताना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज में 3200 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आज हम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी और हमारे परिवार की जान की परवाह है। एग्री? यस और नो? यस। दोस्तों ये सब रिसर्च से समझता है। नेक्स्ट थिंग, टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। मैंने पहले ही बताया, प्राइस डिमांड दो वेरिएबल है, प्राइस में चेंज हो गया तो डिमांड में क्या चेंज हुआ, प्राइस बढ़ा डिमांड में क्या चेंज हुआ, प्राइस कम हो गया डिमांड में क्या चेंज हुआ। तो वो हाइपोथेसिस टेस्ट करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके बाद आप एक डिसीजन पे आ सकते हो कि हाँ ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। सो दैट वी रिक्वायर इन hypothesis testing, we need to conduct the research. अब दोस्तों इन शॉर्ट आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसको मैं एक शॉर्ट में फिर से रिवाइज करूंगा। हमारे पास एवरीडे लेक्चर के लिए जब भी लेक्चर होगा, वी डोंट हैव मोर देन 40 मिनट्स। इस 40 मिनट्स के अंदर मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों को टाइमली ज्वाइन हो जाना है। आज मेरा लेक्चर है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। टाइमली ज्वाइन होना है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को अनम्यूट रहना है। नंबर 3, आप लोगों को आपका जो नेम है जूम ऐप में वो रीनेम करके आपका ओरिजिनल नाम डाल देना है, क्योंकि उसमें क्या दिखता है, आपका मोबाइल का नंबर क्या है वो दिखता है, कोड नंबर दिखता है, तो हमको समझता नहीं कि किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया। तो वो एक कर देना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज में हमने सिर्फ एडमिन को रखा है जो एंटर कर सके कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है कि अननेसेसरीली स्टूडेंट्स कैन मैसेज एनीथिंग व्हिच वी डोंट वांट। आप लोगों के ग्रुप को एक प्रॉपर ऑफिशियल ग्रुप मेंटेन करने के लिए इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय अस, बरोबर है? प्लीज कीप रीडिंग दिस। एंड आल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग इस ग्रुप में ऐड नहीं है लेकिन आपके क्लास के हैं, उन लोगों को बोलो जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाए, जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाए। अब लास्ट की हमारे पास जो 10 मिनट बाकी है उसमें मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, और रिवाइज कराने के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन आंसर के असाइनमेंट दे दूंगा। सो मीनिंग ऑफ रिसर्च, द सिस्टमैटिक मेथड कंसिस्टिंग ऑफ एनुंशिएटिंग द प्रॉब्लम, formulating a hypothesis, collecting the facts or data, analyzing the facts, and reaching certain conclusion, either in the form of a solution towards the concerned problem or in certain generalizations for some theoretical formulation. Next हमने देखा objective find out truth which is hidden and which has not been discovered yet, gain familiarity with phenomenon or to achieve new insight into it, portray accurately the characteristic of a particular individual, situation or a group. Next, determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. Test the hypothesis of a causal relationship between variables.
मैं फिर से बताना चाहूंगा, पहला ट्रूथ फाइंड आउट करना है, एग्री। नंबर 2, गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमेना, दो वेरिएबल के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, मैंने डिमांड एंड प्राइस का एग्जांपल दिया, एग्री। नंबर 3, एक्यूरेटली कोई भी प्रॉब्लम को पोर्ट्रे करना है। आप लोग समझो, मैं अभी ज्यादा कोविड-19 और कोरोना के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसके स्टैटिस्टिक हम लोग रोज देखते हैं, एंड रिसर्च को स्टैटिस्टिक के बगैर प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ओरली में बोल दूं ये ज्यादा वो कम, उससे नहीं चलता है। रिकॉर्ड क्या बोलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एग्री। तो उसके लिए रिसर्च करता है। पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और अ ग्रुप, determine the frequency with which something occur or with which it is associated with something else, क्या हो रहा है, कैसा दूसरों से एसोसिएट है, इसका इफेक्ट किस पे गिर रहा है। आज मुंबई के अंदर कोरोना आने के वजह से, महाराष्ट्र में कोरोना आने की वजह से कितने लोगों का माइग्रेशन हुआ, आपको पता है ना, कितने लोग मुंबई छोड़ के गए। अभी आप लोग में से भी कितने लोग मुझे कौन से जगह से बैठ के देख रहे होंगे पता नहीं, कुछ लोग यूपी में बैठे हैं, कुछ लोग बिहार में बैठे हैं, कुछ साउथ में बैठे हैं, बट आज हम एक है, दूर होने के बाद भी हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। यस और नो? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन लास्ट पॉइंट इज टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, एंड ये होम असाइनमेंट आप लोग को देख के लेना है। राइट एन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, explain meaning of research in detail. Number 2, explain in detail objectives of research. Note, assignment must be handwritten. Number 2, scan copy of assignment to be mailed on this mail ID on or before 17 June 2020. Now listen to me carefully. For example, कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल आकाश, आकाश ने असाइनमेंट लिखा, आकाश ने असाइनमेंट लिखा। अब आकाश क्या करेगा, अपने असाइनमेंट के हर एक पेज के ऊपर अपना सिग्नेचर देगा, डेट डालेगा। अब आकाश चाहे कि दूसरा कोई लेके वो असाइनमेंट कॉपी ऐसे ही दे दे मुझे लाके, तो मुझे समझ में आ जाएगा आकाश का सिग्नेचर है या तो किसी एक का सिग्नेचर है, तो वो दूसरा किसी को दिया मतलब समझ जाएगा। तो आप लोग आपस में भी कोई असाइनमेंट इधर उधर फोटो वोटो भेज के कोई भी कुछ भी भेजा, then that student will be punished, and this will be also important for your internal assignments. सभी लोगों को घर पे बैठ के काम शुरू करना है, टीवाई बीपीआई में अच्छे परसेंटेज लेने के लिए अभी से ही आपका मेहनत शुरू होना चाहिए। आर यू रेडी विथ दिस और नॉट? यस और नो? यस। तो डियर स्टूडेंट, ओनली 2 क्वेश्चंस, मैं इसके पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको भेजूंगा, नॉट ओनली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो कुछ उसके रिलेटेड नोट्स भी सर्कुलेट करूंगा, नेट के ऊपर भी मिल रहे हैं, कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के टेक्स्ट बुक भी मैं आपको दूंगा, शेयर करूंगा। सो आपको उसमें से आंसर निकालने हैं, आपको उसमें से आपको प्रॉपर्ली आंसर निकालना है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगले बार कोई भी लेक्चर हो 6 बजे के पहले ज्वाइन किया जाए। नंबर 2, अपने नाम को रिनेम करके सही नाम लिखा जाए। नंबर 3, आप सब लोगों को म्यूट रखा जाएगा, और जब भी आपको कुछ पूछा जाए तो यू शो योर थंब, दैट हम मान सके कि आप हमारे साथ हो। डिसिप्लिन आपके तरफ से ज्यादा जरूरत है, ये क्लासरूम नहीं है कि वी कैन डायरेक्टली कंट्रोल यू, इट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन व्हिच यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट, डोंट स्क्रबल एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, बिकॉज ऑफ योर स्क्रबलिंग वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट अभी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं उन लोगों को ज्वाइन करने को बोलो, बिकॉज किसी किसी का नंबर कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में गलत दिया रहेगा, पेरेंट का नंबर गलत दिया रहेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है, और उसके बाद ही आप लोगों को, सभी लोगों को ये मेथड इजी लगेगा। अब किसी को कोई भी डाउट है, किसी को सब्जेक्ट में, टॉपिक में, किसी में भी कोई भी डाउट है, तो आप लोगों को मेल आईडी पे वो क्वेश्चन मेल करना है। विद इन 1 or 2 days you will definitely get the answer to it, but at least मेल करने के टाइम पे ये बताओ कि टीवाई बीबीआई सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज अ क्वेश्चन, I will revert you on that mail only. So today we studied about what is research, we studied about why we have to study the research methodology, we studied about the objectives of the research methodology. Hope you understood the session. With this I am stopping myself. Thank you very much.
So okay, next lecture का announcement group में हो जाएगा. Keep checking WhatsApp group. One more thing I would like to tell you. One more thing I would like to tell you. All of you are now general student. You are the student of final year. You are the student of banking insurance. I have seen one of the students just sitting in very formal dress. Just you keep in mind, you are in the media. You are in a Zoom meeting. There are 100 people who are watching you. So when you are coming on the screen, you have to follow some kind of decorum. Okay. So next time we'll meet again and go ahead with the syllabus. Thank you very much. Bye bye.